Now, in the tilling or plowing of the soil, we have used plow or hoe or cultivator. I have explained and I have shown you all the pictures of these things. I think you have understood about that. Now the second process in the preparation of soil is leveling of soil. Do you know, after plowing the soil, the field may have such kind of big crumbs. These are called crumbs. मिट्टी के बड़े बड़े pieces crumbs कहलाते हैं. ये मैं आपको लोगों को दिखा रहा हूँ, ये शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, ये crumbs हैं. इन क्रम्स की वजह से अभी हम सोइंग नहीं कर सकते और इन क्रम्स को तोड़ना पड़ता है. इनको तोड़ने के लिए हम एक लेवलर यूज करते हैं. लेवलर एक लकड़ी का बहुत बड़ा प्लैंक होता है, वुड प्लैंक. उसको हम ट्रैक्टर में पीछे बांध देते हैं और उसके ऊपर एक आदमी खड़ा हो जाता है और वो आदमी इस तरीके से डेलों को दबाते हुए चलता है और दबाते दबाते पूरी तरीके से ये डेल, मिट्टी के डेले बड़े बड़े जो क्रम्स कहलाते हैं, ये क्रम्स बहुत छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. आई एम जस्ट शोइंग द ग्रेन्यूल्स लाइक दिस. ये ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और छोटे छोटे. इससे क्या होता है, इससे जब हम सोइंग की प्रोसेस करेंगे तो इजीली हम सीड्स को इसके अंदर डीपली अंदर घुसा पाएंगे. इज दैट क्लियर? दिस इज कॉल्ड लेवलर, अ बिग log of wood. So in the leveling of soil, leveler is used, which is a big piece of wood plank to break the crumbs. Crumbs are the big pieces, very big pieces of soil, and leveling of soil is done. Now again I am repeating what agricultural implements we have used in the process of preparation of soil. 3. Plow. In place of plow we can use hoe. In place of plow or hoe in the modern time, tractor driven plow is called cultivator. And in the leveling of soil we are using a device called leveler, which is a simple piece of wood, big piece of wood. Now I think you know very much about this preparation of soil and the chapter crop production and management. My students, I think so you have so many questions in your mind, and because this is not a live class, I am not teaching in the classroom, so I can guess your questions, and I have written here the 3 kinds of questions which you can think easily in the classroom. My first question is, what is the need to turn and loosening the soil? हमें सॉइल को, जब खेत में सॉइल पहले से पड़ी हुई है, हम डायरेक्ट उसमें बीज को, सीड को सो करने के बाद क्रॉप को क्यों नहीं उगा सकते? हमें क्यों इतने काम करने पड़े प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में, टिलिंग और प्लोइंग, लेवलिंग ऑफ सॉइल? आई एम गिविंग यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज वेरी गुड. फर्स्ट पॉइंट, to turn and loosen the soil, various nutrients held in the dead organisms present in the soil are back and again absorbed by the soil. I am just explaining you. All of you know that in your garden as well as in the agricultural field, when we have harvested one crop, already there are so much manure, fertilizer, as well as microbes and dead organisms are there in the soil. So all these dead organisms have their nutrients in it. By tilling process or plowing process or turning process, these all dead organisms will come up at the top layer of the soil, so that soil can easily decompose and absorb all the nutrients from these dead organisms in it. What is the use of this? The very important thing is, हमें कम मैन्योर और फर्टिलाइजर जब हम क्रॉपिंग करेंगे तो कम डालना पड़ेगा, हमारी क्रॉप की ईल्ड बहुत अच्छी होगी. नंबर 2, loosened soil allows the roots of plants to penetrate deep in the soil and allows the roots to breathe easily. All we know that all the plants are also the living beings, उनके अंदर जान होती है,
तो उनकी रूट्स को भी ब्रीथ करने के लिए मौका मिलना चाहिए ना। तो वो मौका कैसे मिलेगा? जब उनकी रूट्स तक ऑक्सीजन लेवल पहुंचेगा एयर का। तो वो ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी? जब हमारी सॉइल थोड़ी लूज होगी, जैसे ये लूज है। जस्ट शो दिस सॉइल। Now you are seeing this soil. This is granule soil. I have just break down all the crumbs, big pieces of soil. Now you are seeing here the spaces of each and every granule, so that when we sow the seed and seed will develop and roots will be there, then roots can easily breathe, so that plants can grow easily. Also, all we know that the loosened soil helps in the growth of earthworms and microbes present in the soil. These organisms are called friend of farmers. We all know that there are so much earthworms as well as other microbes inside the soil. When we loose and turn the soil, they will come up at the top layer, and they are also used as the manure, and so these are called the friend of farmers. I think you can understand my point, and the answer of the question: need to turn and loosening the soil. The second question, it may be in your mind that sometimes manure is added to the soil before tilling and also watering. Give reason. अगर आपके यहाँ खेती होती है, आपने गर्मियों की छुट्टियों में अपने खेतों में जाके देखा होगा, आपके घर के लोग जो खेती करते हैं वो कभी कभी लेवलिंग करने से भी पहले जो आपका सॉइल है उसको वाटरिंग करते हैं इस तरीके से। और वाटरिंग करने के बाद उसमें थोड़ा सा मैन्योर डाल देते हैं। आई एम जस्ट टेकिंग मैन्योर, दिस इज homemade manure. My question, as per your expectations, is what is the need of watering as well as manuring in the starting of preparation of soil? The very simple answer is this process helps in proper mixing of manure in the soil, and because sometimes you have seen, because sometimes of the soil you have seen that soil is so much dry, so dry soil cannot be turned easily and loosened easily, and if we just try to loosen the soil, dry soil, then we will get more crumbs, isn't it? So first of all, we just watering the soil as well as manure, add some manure in the soil, and we just do the process to get a better soil for our better yield of crop. This why the leveling of the soil is needed. The third question you can arise. This is because the soil is leveled for sowing as well as for the irrigation purpose. अगर soil की leveling हो जाएगी तो उसमें हम जब पानी डालेंगे तो evenly पानी हमारी पूरी soil को मिलेगा। देखिए पूरी soil को evenly पानी मिलेगा, और तो हमारी इरिगेशन बहुत अच्छी हो जाएगी और हम बीज को आसानी से इसके अंदर सो कर सकते हैं, डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।